Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture number 5.5 from the chapter number 5. The subject is nanotechnology. In the previous series of the discussions, in the previous series of the lectures, we are discussing some of the few processing technologies of the surface modifications. In the previous series, we discussed the various technology which is based on the plasma. In the current lecture series, today we discuss the another new technology for the surface modifications, which is the sputtering process. Now, what is the meaning of the sputtering and how the process which is performed? Let's start the discussions on the sputtering. A sputtering is a widely used and highly versatile vacuum coating system which is used for the depositions of the varieties of the coating material. तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये एकदम वर्सटाइल प्रोसेस है जो एक वैक्यूम कोटिंग प्रोसेस जो है उसके वजह से उसको जाना जाता है और इट इज़ डिपोजिटिंग द वेरियस कोटिंग मटेरियल्स ऑन द मटेरियल सरफेस। इससे आप काफ़ी सारे जो है वो कोटिंग मटेरियल्स आप मटेरियल के ऊपर जो है वो कोट कर सकते हैं। ए प्लाज्मा at a higher pressure is used to knock a metal atoms out of the targets. The energetic atom is deposited on the wafer which is near the targets. A higher pressure is produce a better step coverage due to a more random is angle delivery. The excess energy of the ions is also add in it with increasing the surface mobilities, which is known as a moment of the atoms on the surface. तो बेसिकली ये प्रोसेस के अंदर जो होता क्या है, आप मैं एक इजी लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये प्रोसेस एक क्लोज्ड वैक्यूम चैम्बर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा जो है वो हाई प्रेशर प्लाज्मा जो है वो स्पटरिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करेगा, जिस मेटल सरफेस को आपको कोट करना है उस के ऊपर जो है वो प्लाज्मा हाई प्रेशर प्लाज्मा स्ट्रीम जो है उस मेटल के एटम के ऊपर नॉक करेगा। वो इतना एनर्जेटिक होगा कि उससे उसके ऊपर जो है वो पूरा सरफेस जो है वो कवरेज जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्रिएट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है जो आप एटम्स आयन एटम्स जो है जिस जिस कोटिंग मटेरियल्स का जो आप यूज़ कर रहे हो उस के जो आयन्स जो है एनर्जेटिक आयन्स है वो भी ऑल्सो एक वो इस प्रोसेस के अंदर खुद एक सरफेस मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज करने में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ द स्पटरिंग विच इज़ used for the vacuum coating system, or we can used for the varieties of the coating material during this sputtering process. So here you can see that there is a schematic illustrations you can see that in the first slides, and this is the basic what kind of the process which is going on during this sputtering process. You can observe this in the schematic illustrations. On the left sides you can see that the sputtering of the aluminum atoms, we are off the sputtering from the aluminums. So on the right sides we can generate a secondary electrons. यहाँ से बेसिकली ये स्पटरिंग प्रोसेस क्या है कि एटम को एटम के साथ डिफ्यूज करके एक सरफेस मॉडिफिकेशन प्रोसेस को डेवलप करना है। आप जिस तरीके का सरफेस के ऊपर जो है वो एक तरीके का आप मॉडिफिकेशन यानी एक तरीके से ये मैं बोल सकता हूँ कि आप जिस तरीके का प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर डेवलप करना चाहते हैं उस तरीके का प्रॉपर्टी आप इस स्पटरिंग प्रोसेस से जो है वो यूज़ जनरेट कर सकते हैं। सो विच आर द एक्सेलरेटेड अक्रॉस द sheath regions. The first which is the ionized oxides, second which is the ionized and the impurities atoms,
this oxygen is accelerated which is towards the substrates and go to a film bed. After the collision is ionized, there are the two free electrons. This double the available electrons for the ionization. This ongoing doubling process is called as a impact ionizations, which is sustained as a plasma. तो ये फिगर के साथ जो है वो आप मैं इसको आपको और इजी समझाने की कोशिश करूँ. ये फिगर थोड़ा आपके लिए जो, क्योंकि ये प्रोसेस ओरिएंटेड फिगर नहीं है, राइट. यहाँ पे आपको सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से एटम का एटम के साथ एक तरीके से रिप्लेसमेंट होता है. मैं आपको थोड़ा और इजी करके अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एटम टू एटम रिप्लेसमेंट्स है. और सपोज यू हैव टू remove certain kind of the atoms from the top of the surface, and you have to install some kind of the very hard kind of the atoms which is increase the hardenabilities of your product material. So you are using that kind of the coat materials, and we use the kind of the plasma streams, and due to that plasma stream this coating material is atoms which is ionized, and we are focusing towards the product materials, and it will be creating some kind of the relevant properties on the required materials. So these are the process. The energy of each incoming ion is 500 to 1000 electron volt. Energy of sputtered atoms is यहाँ पे जो आयनिंग है, इनकमिंग जो आयन्स है उसका, और एक स्पटर्स उसकी जो है वो एनर्जी आपको यहाँ पे बताई गई है. दस द स्पटरिंग प्रोसेस इज़ वेरी इफिशिएंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो एक जो एटम की जो एनर्जी है वो काफ़ी जो है वो एक तरीके से ज़्यादा बोली जा सकती है. इसीलिए इस प्रोसेस को वेरी इफिशिएंट प्रोसेस जो है वो कोटिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो माना जाता है. फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू 95% ऑफ द इनकमिंग एनर्जी इज गोज टू टारगेट हीटिंग एंड द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. यानी इस प्रोसेस के थ्रू आप 95% जो इनकमिंग एनर्जी है वो आप एक प्रॉपर टारगेट से हीट करके एक आप वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. द हाई रेट ऑफ द स्पटर प्रोसेसेस is needs the efficient cooling techniques to avoid a target damage from the overheating. यानी एटम टू एटम टारगेट कर रहे हैं, राइट. आप प्रॉपर तरीके का कूलिंग प्रोसेस अगर यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पे एक तरीके के चांसेस हो सकते हैं कि ड्यू टू द सर्टेन काइंड ऑफ द हीटिंग, राइट, it will certainly kind of the changing their relevant properties. So यहाँ पे there is a serious problems of the heating. So you need to use proper kind of the cooling system during this process. The sputtered species in the general are the predominantly neutrals. The energy of the injected जो बाहर आ रहा है वो atoms is shows a Maxwellian distributions with a long tail towards the higher energies. The energies of the atoms or a molecules is sputtered at a given rates are about and one order of the magnitudes which is higher than those thermally evaporated at a same rate, which often leads to a better film quality. However, since a sputtering is yield are low and ion current are limited, आपके पास जो इसका यील्डिंग है वो काफ़ी कम है कंपेरेटिव टू आयन करंट. स्पटरिंग डिपोजिशन रेट्स आर इनवेरिएबली 1 to 2 orders of the magnitude which is lower, which is compared to the thermal evaporation rate under the normal conditions. What is the basically mechanism of the sputtering process? The fundamental mechanism of the sputtering is the collisions interactions between the impinging ions and a lattice atoms of the target. बेसिकली इसके पीछे का मैकेनिज्म जो है वो क्या मैकेनिज्म है? जो फंडामेंटल जो मैकेनिज्म स्पटरिंग प्रोसेस का बोला जा सकता है वही है कि एक कॉलिशन इंटरेक्शंस होता है किसके बीच?
जो आप इम्पिंजिंग आयन, जो आप एटॉमिक आयन थ्रो कर रहे हो वो, और जो आपके प्रोडक्ट का जो एक लैटिस एटम्स है जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, राइट, उस दोनों के बीच एक कॉलिशंस इंटरेक्शंस होता है, एंड द आयन इज डिसिपेट्स इट्स एनर्जी इन द कॉलिशंस कैस्केड्स। वहाँ पे वो आयन एक तरीके से एक डिसिपेट होकर एनर्जी कॉलिशंस करता है। द इंजेक्शंस डेप्थ ऑफ द टारगेट एटम इज अप्रोक्सीमेटली 1 Nm. For a quantitative statements, one has to apply the formalized of the transport theory to the mechanisms of the collisions cascades. At ion energies is, you can say, as a Born-Mayer potential is maybe used, or we can say that there is a thermal Fermi potential is valid. These are the some of the characteristics of the sputtering process. So here in the characteristics, the emissions from a cathode, which is include a neutral atoms, ions, both the positive and negative, electrons, neutral clusters of the atoms, and there is a change clusters of the atoms. Of these, the vast majorities are the neutral atoms. These atoms have a kinetic energies approximately 50 to 100 times that of the neutral atoms is generated from a thermal evaporation sources. जैसे एक वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए इसी तरीके से एक आपने जो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा वहाँ पे एक इवापोरेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे इवापोरेशन सोर्सेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द वर्ड विच इज़ द मीनिंग ऑफ द इवापोरेशंस. एक तरीके से एटम्स थ्रू करता है, उस एनर्जी के थ्रू वहाँ पे एक इवापोरेशंस प्रोसेस हो जा रहा है, राइट. इवापोरेट होना यानी एक तरीके से वहाँ से निकल जाना, वैक्यूम कंडीशंस के ऊपर जो है एक तरीके से वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाना, राइट. दिस एडिशनल एनर्जी इज थॉट to be the reason for a greater adhesion is often observed for a sputter deposited film over a thermally evaporated film. Due to the relatively high pressures in an operating sputter deposition chamber, the near free path of the sputtered species is short. The numerous gas phases collisions which a sputtered material is suffer is between the target and the substrate. It tends to reduce the amount of the kinetic energy the deposited species have upon arrivals. The density and a crystal structure of a thin films are affected. This is the sputtering yards. This is less importance relative to your subject because you currently you need to have to focus only the process oriented. I think you didn't need to understand the kind of the depth mechanism behind this process. Just right now you have to focus on the basic, the process oriented thing, how the surface modification is to be occurred, right? So these are the sputter deposition technologies. First, which is a DC dart sputtering. Second, which is about the magnetron sputtering, which is having the two types, which is the unbalanced magnetrons and the balanced magnetrons. Third, which is the RF sputtering. The third process, which is called as a RF sputtering. The fourth process, which is the reactive gas sputtering process. Fifth process, which is known as a ion beam sputtering process. The fourth process, which is a reactive gas sputtering process. Fifth process, which is a ion beam sputtering process. Sixth process, which is a pulse DC AC sputtering process. So these are the kind of the sputter deposition technologies. With using these technologies, we can deposit it as sputters atoms on the product material. Are you getting my point? Okay, let's start the further discussions on the process. So here we try to understand the kind of the two process from the various technologies. So the first technologies of the sputter depositions, which is the magnetron sputtering. So let's start how the magnetron sputtering is to be working.
So the magnetron sputtering is the most commonly used method for the sputtering deposition. ये जो मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग प्रोसेस है वो वाइडली यूज्ड होने वाला, काफ़ी बार यूज़ होने वाला, काफ़ी जो फेमस है उस तरीके का स्पटरिंग डिपोजिशन प्रोसेस है. It is usually utilize a strong electric and magnetic field to trap the electron close to the surface of the magnetron. So it is usually utilized. इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता, यूज़ होता है टू ट्रैप द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने के लिए, टू क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट्रॉन, ताकि हम लोग उसको उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर सके किसके आसपास, जो मैग्नेट्रॉन सरफेस है उसके आसपास उसको ट्रैप कर सके. इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज होता है, विच इज़ नोन एज द टारगेट. उसको हम टारगेट भी बोल सकते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स follows a helical path which is around a magnetic field lines, undergoing a more ionizing collisions with a gaseous neutral which is near the target surface than would otherwise occur. Extra argon ions is created as a result of these collisions, which is leads to a higher deposition rate. It also means that a plasma can be sustained at the lower pressures. Sputtered atoms are generally changed and so are unaffected by a magnetic traps. So here you can see that a graphical illustrations of this process which is going on a closed vacuum chambers. So here you can see that there is a source of the cables from the bottom of the point. The whole cables are insulated, and there is a kind of permanent kind of the magnetic with the shield they are using, and outside that there is certain kind of the water cooling systems are to be installed. So in the top of the water cooling systems on the permanent magnet, you can see that there is a certain kind of the material which you need to change the surface properties or the surface modification which is called as a target. On the upper side of that, there is a certain kind of the substrate material which is called as a material you need to change its properties, and it is connected with the certain kind of the thermocouples, so you can consider the temperature of that kind of the change. So the substrate which is connected with the water cooling systems and the heater systems, the heater which is used to creating certain kind of the temperature, and to control this temperature we are using certain kind of the cooling system, as we are using some kind of the gas inlets are entering inside the vacuum chambers, right? This is interact with the substrate materials and the target materials, and due to the electric and magnetic field, they are that gaseous atoms are ionized, and it is reactive kind of the mechanism which is take place in this closed vacuum chambers, and there is a certain kind of the ionized gas atoms is focused on the targets, through the targets, and it will change the substrate surface modifications properties. So this is the whole process of the magnetron sputtering process. Now the second process, which is the ion beam sputtering process. Now let's try to understand the ion beam sputtering process. What is happening in the ion beam sputtering process? Ion beam sputtering is utilize an ion source to generate a relatively focused ion beam which is directed at the target to the sputters. यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर हम लोग आयन सोर्स का यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट ए रिलेटिवली फोकस बीम, जिससे हम लोग एक फोकस आयन बीम जो है वो जनरेट कर सके, उसको टारगेट के ऊपर फोकस करके वहाँ पे स्पटरिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है. ए आयन सोर्सेस इज कंसिस्ट ऑफ द कैथोड्स एंड एनोड विथ ए कॉमन सेंट्रल एक्सिस. यहाँ पे आयन और कैथोड जो है वो एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस के अंदर जो है वो तरीके से यूज़ किया जाता है. अप्लाइंग ए हाई वोल्टेज फीड. अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो है वो अप्लाई कर रहे हैं
with the field of the 2 to 10 kilowatts to the anode which has created the electrostatic field. अब आप एनोड को पावर सप्लाई देंगे 2 से 10 वोल्ट का, तो वो क्या करेगा, तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इनसाइड द आयन सोर्सेज वो जनरेट करेगा, कन्फिनिंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सैडल पॉइंट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सोर्स। अब उसकी वजह से क्या होगा, एक तरीके से वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सैडल पॉइंट थ्रू द सेंटर जो सोर्स है उसके इर्द गिर्द जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। व्हेन द आर्गन गैस इज इंजेक्टेड इनटू द आयन सोर्सेज, अब क्या हो रहा है कि जैसे वो एनर्जाइज्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन जनरेट फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो गया, तो उस फील्ड के अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं आर्गन गैसेस को। अब उसकी वजह से क्या होगा कि हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड इस केसेस अ गैस इज टू बी आयोनाइज। अब आर्गन गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा क्योंकि अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो चुका था, विच इज़ क्रिएटिंग ए प्लाज्मा इनसाइड द सोर्स रीजन। अब उसकी वजह से वहाँ पे एक प्लाज्मा जो फील्ड है, एक तरीके से प्लाज्मा जो है वो जनरेट हो जाएगा इनसाइड दैट सोर्स रीजन। दिस आयंस आर देन एक्सेलरेटेड। अब वहाँ पे क्या होगा कि वो आयंस जो है आर्गन के एटम्स में से जो आयंस जनरेट हो रहे हैं वो क्या करेंगे, एक तरीके से वहाँ से एक्सेलरेट मूव करने स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एनोड रीजन्स टू द एग्जिट एपरेटस विच इज़ नोन एज ए कैथोड विच इज़ क्रिएटिंग एज ए कोलिमेटेड आयन बीम। अब उसको वो एक्सेलरेट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर गए, इसलिए उसको कैलिमेटेड आयन बीम जो है वो बोला जाता है। द रिजल्टिंग आयन बीम इज इम्पिंजिंग अपॉन अ टारगेट मटेरियल। अब जो रिजल्टिंग आयन बीम जनरेट हो रहा है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो टारगेट मटेरियल के ऊपर वहाँ पे एक्सेलरेट कर रहे हैं, वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वाया दी मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द आयन एंड द टारगेट। एक जो एक्सेलरेशन मोमेंटम जनरेट हुआ उसके थ्रू जो है वो टारगेट कर रहे हैं। आप स्कीमेटिकली देख सकते हैं कि एक गैस सोर्स जो है, जो एक नोजल के थ्रू जो है वो प्राइमरी आयन बीम जो है वो आप वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। अब वो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जो है वो एटम्स जब आर्गन के जो है उस फील्ड के अंदर आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो फिर वहाँ से वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे और वहाँ से जो मेटल जो है वो स्पटर होकर रिमूव होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। द स्पटर दिस मटेरियल ऑन टू द सैंपल, एक तरीके से मेटल जो है उसको रिमूव करने या फिर मेटल प्रॉपर्टी को एनहांस करने का ये प्रोसेस जो है वो जाना जाता है। Now, what are the advantage of this sputtering process? It is able to deposit a wide varieties of the metal, which is insulated, alloys or composites. इससे मदद से आप जो है वो काफ़ी वेराइटीज़ के अंदर मेटल, इंसुलेटर्स और एलॉयज़ और कंपोजिट को डिपॉजिट कर सकते हो। रेप्लिकेशंस ऑफ द टारगेट कंपोजिशंस इन द डिपॉजिटेड फिल्म, इट इज़ कैपेबल ऑफ द इन situ cleaning, which is prior the film depositions by reversing potentials on the electrodes, better film quality and a step coverage than the evaporations, can use a large area target for the uniform thickness over a large substrate, sufficient target material for many deposition is to be take place, no X-ray damage is to be developed in this sputtering process. Now, what are the disadvantage? A substrate damage is due to the ion bombardments or a UV generated by the plasma. यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि एक तरीके से आयन एक जो है वो जैसे बॉम्बार्डिंग होती है उसी तरीके से आयन बॉम्बार्डिंग हो रही है, तो इसकी वजह से जो है वो आपको जो प्लाज्मा जो है वो यूवी जनरेशंस करेगा, तो उसकी वजह से आपका सबस्ट्रेट जो है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। द डिपोजिशन रेट ऑफ द सम मटेरियल इज़ क्वाइट लो, यानी आप फिल्म जनरेट करना चाह रहे हैं पर उसका डिपोजिशन रेट जो इतना कम है ताकि आपको सरफेस प्रॉपर्टी एनहांस करने में काफ़ी वक्त लग सकता है और काफ़ी इसके अंदर एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंसिडेंट्स ऑन द टारगेट विच इज़ बिकम एज अ हीट इज मस्ट बी थ्रू बी रिमूव्ड. It is difficult to deposit uniformly on the complex shapes such as a turbine blade. जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स शेप है उसके ऊपर ये स्पटरिंग प्रोसेस आपको डेवलप करना है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है. दिस इज़ ए हाई परफॉर्मेंस
thick coatings are hard to produce due to a high इंटरनल थर्मल रेसिडुअल स्ट्रेसेस लेवर. आपको अगर एक थिक लेवर जो है, थिक लेयर कोटिंग जो है वो जनरेट करना है, तो ये इस प्रोसेस को थ्रू थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस हो रहे हैं उसका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो उस रेसिडुअल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए जो एक तरीके से हीट ट्रीटमेंट या फिर हीट ट्रीटमेंट या फिर कोई कूलिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर चाहिए, वो वहाँ पे प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्पटरिंग प्रोसेस? It is used for the aerospace applications and the defense applications in the field of the head-up of the cockpit displays, jet turbine engines, mirror for the opticals and X-ray telescopes, night vision equipments. Now for the wear coatings in the anti-corrosion coatings, anti-seize coating, dies and molds, swing needles, then the tools and the drill bits and the bit hardenings. Then we can also use for the automotives like as a auto headlights and the tail lights, auto trims components, drivetrain bearings and the components, wheel and the rims. Now for the optic applications, we can use it for the anti-reflective or anti-glare coatings, then the cable communications, laser lenses, optical filters for the autochromatic lens and the spectroscopy. So these are the applications of the sputtering process. So in this lecture we try to understand the basic conceptual thinkings of the sputtering process. We try to understand the basic concept of the sputtering process. This is a basic kind of the coating process which is used for the surface modifications. Then we also understand its characteristic, its process, its kind of the technologies through which the sputtering process which is to be going on, or we can take in process like the mactrons and the ion beam sputterings. Then after that we can try to understand its advantages, disadvantages and its applications. So this is all about the today's lecture. If you have certain kind of the doubts, queries regarding in this sputtering process lecture, you can ask your queries and doubt into the comment sections. Please write your enrollment number in the comment sections, which is counted as a online attendance. Thank you so much for watching this video lecture.